Assalamu alaikum, Shaheera. How are you? Walaikum assalam, Khatija. Can you hear me? I can hear you. Welcome to the conversation. And how are you doing? Are you doing well? I am doing well. I think I just need to take you back. Can you hear me now? Yeah, I can hear you now. So, tonight our conversation is about youth activism and youth rights in Pakistan. And you, as a youth activist yourself, can add a lot to this topic, undoubtedly. So, first, I would like to thank you for joining us today and for taking out time from your busy schedule. Um, and next, congratulations for winning the Best Actress Award in RAZIA. You really deserved it. And surely the journey must not have been a Thank smooth. you so much. Yeah. Okay, so let's start with your journey as a Fulbright scholar in 2017. So you went to the US, and a day before you, your cousin Sabika Sheikh, who was also an exchange student, she went there. And a few months later, she was killed in the Santa Fe school shooting, a few weeks before her return to Pakistan. So you started a campaign in the US to get gun safety legislation introduced to the US. In 2019, after facing much challenges, you introduced the Sabika Sheikh Firearm Licensing and Registration Act, a first of its length historic bill. After returning to Pakistan, you campaigned for an increase in youth representation in political leadership um, in yes, and in 2023 you were offered a leading role in the drama Razia, which I myself loved so much because of its gender-based discrimination eradicating theme and how realistically it portrayed the duplicity of our society, towards genders and different sexualities. So, how do you think, Shahira, Razia can play a role in changing the stereotypes and guiding the youth of Pakistan? Okay, first of all, thank you so much for having me, Khatija. I think a lot can be said here. I mean, for example, let's take the example of Razia, since you mentioned Razia. I think Razia का जो role था उसमें मैं ये देखा कि she is actually, I mean, interestingly जो Razia drama था that was I mean that dated back in time. तो वो आज का नहीं दिखाया था हमने कुछ सालों पहले का दिखाया था उसमें. But I mean the interesting fact is कि वक्त पहले का भी आप उठा लें अपन भी उठा लें not young people like Razia, they have this instinctive, gut feeling in themselves that they do not want to shut up, they do not want to shut down, they do not want to sit back. And I think that's something very interesting, especially in, I would say, millennials, and now very, very much so in the Gen Zs as well. कि जो हमारी सोसाइटल नॉर्म्स होती हैं उसको चैलेंज करने का एक इनहेरेंट इंटरेस्ट जो है ना वो यंग लोगों में हमें दिखा है. और उसी के नतीजे में ऐसा होता है कि यंग लोगों को इस चीज़ का बहुत बड़ा क्रेडिट जाता है कि डिफिकल्ट कॉन्वर्जेशंस लाइक यू आर डूइंग राइट नाउ, द डिफिकल्ट कॉन्वर्जेशंस व्हिच young people have and the safe spaces that they create, उसी के नतीजे में होता है कि माशरे के अंदर जो मुश्किल कॉन्वर्जेशन है वो हो पाती है और ग्रेजुअली सोसाइटल रिफॉर्म्स या पॉलिटिकल रिफॉर्म्स जो है वो उसी के नतीजे में होते हैं. एंड आई मीन फॉर एग्जांपल पाकिस्तान alone is not the only example. Globally as well, we've seen in the very recent years that, for example, US की आपने बात की, US में gun violence की आप बात कर लें, who led the campaign? The young people led the campaign. The school-going kids led that campaign. जिनको हमारे मुल्क में इवन उनके माशरे में भी ये बोलते चुप करा देते थे कि यार आप 17 साल के बच्चे हैं, आप कर ही क्या लेंगे ना, you're a kid, you're too young to change the world. Those kids actually stormed Washington DC. Those kids stormed the Capitol building. Those kids stormed the US Congress. Yeah. और यही चीज हम पाकिस्तान के अंदर देख रहे हैं. आप क्लाइमेट मार्चेस देख रहे हैं in recent years. Any previous generation has not shown this much of societal awareness and the sense of urgency. Awareness to चलें एक और चीज है. The sense of urgency, that restlessness. कि climate emergency है हमारे ऊपर. That sense of urgency, not just for climate, but for a lot of other things, is felt by young people. And that is why I think a lot of credit should be given to young people for having difficult conversations. All right. So, Shahira, you also demand a 30% youth quota in elections. So, how do you think it can help? So I think सबसे पहले जो हमें चीज डिस्टिंग्विश करने की जरूरत है वो ये कि 30% कोटा जो है
वो रिजर्व सीट्स की बात नहीं कर रहे हैं, क्योंकि लॉट ऑफ क्रिटिसिज्म कम्स फ्रॉम द फैक्ट कि लोग बोलते हैं कि यार आप रिजर्व सीट्स की बात कर रहे हैं तो आप तो ये उल्टा लेजी कर रहे हैं हम लोगों को ना, कि आप उनके हाथ में पकड़ा रहे हैं, हैंड आउट्स दे रहे हैं। जो मेरी कैंपेन थी वो स्पेसिफिकली रिजर्व सीट्स के अगेंस्ट थी। वो इस चीज के बारे में थी कि आप 30% इलेक्शन टिकट्स देंगे हम लोगों को। अब ये फैक्ट है कि पाकिस्तान में 8 मई इलेक्शन होंगे। ये फैक्ट है कि उसमें नियरली 170, द लास्ट टाइम आई चेक, नियरली ओवर 170 पॉलिटिकल पार्टीज रजिस्टर्ड हैं विद द इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान। तो 170 पॉलिटिकल पार्टीज कॉन्टेस्ट करेंगी इलेक्शंस, इलेक्शंस होंगे। तो जब ये हो रहा है, पूरा स्ट्रक्चर बना हुआ है और उस पूरा प्रोसेस, डेमोक्रेटिक प्रोसेस हो रहा है, तो मेरी तो सिंपल सी 3 डिमांड्स थी उस बिल के अंदर। वो डिमांड्स ये थी कि, पहली डिमांड ये थी कि कोई भी पॉलिटिकल पार्टी जब इलेक्शंस में पार्टिसिपेट करे तो 25 से 35 साल के जो मिडिल क्लास फैमिलीज के, वर्किंग क्लास फैमिलीज के जो यंग लोग हैं, उनको आप 30% इलेक्शन टिकट्स देंगे। तो पॉइंट इस प्रोसेस हो रहा है इलेक्शन का, तो आप क्यों डिसएंफ्रेंचाइज कर रहे हैं इस मुल्क की 64% जो पॉपुलेशन है उसको? क्यों डिसएंफ्रेंचाइज कर रहे हैं उस पॉपुलेशन को जो 2040 में जाके 150 मिलियन होने वाली है? बाय द वे, क्यों डिसएंफ्रेंचाइज कर रहे हैं उस पॉपुलेशन को 15 से 29 का एज ब्रैकेट, बाय द वे, जो 1/3 है इस मुल्क की पॉपुलेशन का? तो अगर आपने उनको इंक्लूड करना है, 30% इज नॉट टू मच टू आस्क फॉर। उस बिल की दूसरी डिमांड ये थी कि जब यंग लोग इलेक्ट होकर आ जाएंगे पार्लियामेंट के अंदर, तो 30% पॉलिटिकल लीडरशिप जो, या पार्लियामेंट की जो लीडरशिप पोजिशन होती है, तो बहुत सारे लोग इस बात को नहीं समझते कि एक्चुअल फैसले लीडरशिप पोजिशन में लिए जाते हैं। तो उन पोजिशन का 30% आप इंडियन लोगों को देंगे। और तीसरी डिमांड ये थी, और आखिरी डिमांड ये थी, कि जब आप इलेक्शन में 30% टिकट्स देंगे इन लोगों को, तो इनको इलेक्शन कैंपेन जो है ना इनकी, उसको फिर आप फाइनेंशियली सपोर्ट भी फिर पॉलिटिकल पार्टीज करेंगी, बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट वर्किंग क्लास यंग पीपल जो कि बिजनेस या पॉलिटिकल फैमिली से नहीं आते। तो शहीरा, आपकी इन डिमांड्स को एक्सेप्ट किया गया है अब तक या नहीं? देखिए मतलब भैया, ये प्रोसेस मैंने स्टार्ट किया था 2019 में। इनफैक्ट जब मैं यूएस में थी तो मैंने पूरी रिसर्च स्टार्ट की थी इस बिल के ऊपर, और 1 साल मैंने बाकायदा लगाया था इस चीज़ को रिसर्च करने में, स्टडी करने में। आई स्पोक टू अ लॉट ऑफ स्कॉलर्स अराउंड द वर्ल्ड, आई स्पोक टू अ लॉट ऑफ एक्टिविस्ट्स अराउंड द वर्ल्ड। मैंने बाकायदा लिटरेचर पढ़ा है खुद, पूरा 1 साल लगा के उसके बाद ये बिल लिखा है। तो जब बिल लिख दिया 2019 में, प्रोसेस शुरू हुआ, फिर मैं पाकिस्तान आ गई 2019 के एंड में, यूएस से पढ़ाई करके वापस आ गई पाकिस्तान। फिर मजीद 4 साल मैंने लगाए पाकिस्तान के अंदर लॉबिंग की इस बिल को लेके, यानी कि अकेली, मतलब मैं कराची में लॉयर्स से मिली, सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट से मिली, मैं मीडिया के लोगों से मिली, और मैं नियरली 30-40 पार्लियामेंटेरियन से मिली अक्रॉस पॉलिटिकल पार्टीज, पीटीआई, पीपल्स पार्टी, पीएमएलएन, एमक्यूएन, जमात इस्लामी, नेम इट। उस पूरे 4 साल के प्रोसेस के नतीजे में ये हुआ कि पिछले साल 2022 में, इन द मंथ ऑफ मई, मई की आई थिंक 24th मई था लास्ट ईयर, द बिल गॉट इंट्रोड्यूस्ड इन द नेशनल असेंबली। So that itself is a very unprecedented first step, क्योंकि नॉर्मली प्राइवेट मेंबर बिल, क्योंकि बिल्स भी होते हैं वो दो तरह के होते हैं ना, तो गवर्नमेंट बिल्स होते हैं और एक प्राइवेट मेंबर, यानी कोई अकेला एमएलए उसको पिच कर रहा होता है। तो मेरा बिल एक अकेले एमएलए ने किया था। वो प्राइवेट बिल, प्राइवेट मेंबर बिल नेशनल असेंबली में इंट्रोड्यूस हो गया, और बगैर किसी ऑब्जेक्शन के, क्योंकि हमने जो रेलिवेंट मिनिस्टर थे फॉर पार्लियामेंट्री अफेयर्स उनको भी ऑन बुक कर दिया था, उनको भी कॉन्फ्रेंस में ले लिया था। तो बिल इंट्रोड्यूस हुआ नेशनल असेंबली में, और वो चला गया, वो जो प्रोसेस होता है ड्यू प्रोसेस, उसके तहत वो चला गया स्टैंडिंग कमेटी ऑन पार्लियामेंट्री अफेयर्स के पास चला गया। इंटरेस्टिंगली उस कमेटी के चेयरपर्सन को भी हमने ले लिया, ऑन बोर्ड ले लिया, रियली इंटरेस्टेड इन द बिल। but because we are operating in Pakistan or things take a while here, तो टेक्निकल वजूहत की बिना पे वो बिल लैप्स हो गया, यानी वो इतना डिले आया और टेक्निकल यूज के अंदर कि वो लैप्स हो गया, एंड नाउ वेटिंग कि कब अगले इलेक्शन हो और नए सिरे से पूरा प्रोसेस दोहराया जाए। जी जी। ओके। तो आपकी ये जो आपकी एफर्ट्स हैं एंड द कैंपेन दैट यू रैन, तो इसमें गवर्नमेंट ने आपकी हेल्प की थी? आई मीन से खतीजा, आई थिंक एक बहुत ही विशफुल थिंकिंग होगी पाकिस्तान में रहते हुए कि गवर्नमेंट हमारी हेल्प करे ना, मतलब यहाँ तो इतना, कभी कभी इतनी डिफिकल्टीज हो जाती हैं टू बी रियली ऑनेस्ट, कि आपको लगता है कि इफ इट्स इवन वर्थ इट, बट आई मीन अगर हम सभी ऐसे सोचने लग जाएंगे तो फिर चेंज नहीं आएगा ना चीज़ों के अंदर। तो गवर्नमेंट की हेल्प तो
एज सच नहीं थी बिल्कुल भी। ये अलबत्ता हुआ था कि जो मिनिस्टर, जो एमएनए थे जिन्होंने उस बिल को प्रेजेंट किया था नेशनल असेंबली में, उनका नाम था राना इरादत, ही इज अ यंग एमएनए। तो वो उस पार्टी से उनका ताल्लुक है जो उस वक्त गवर्नमेंट में थी। तो फिर उन्होंने रेलिवेंट मिनिस्टर से बात करके उनको ऑन बोर्ड कर लिया और ये हुआ, यानी कि प्रॉपर गवर्नमेंट एंडोर्समेंट, गवर्नमेंट सपोर्ट, नथिंग ऑफ दैट्स व्हाट हैपेंड, नोबडी रीच्ड आउट टू मी एवर। अक्सर तो ऐसा होता था कि मैं सोशल मीडिया में मैं पोस्ट लगाती थी सारे स्टेप्स की ना, कि यार आई वेंट टू नेशनल असेंबली टुडे, आज ये हुआ है, आज ये हुआ है। मैं डॉक्यूमेंट करती थी, ट्रांसपेरेंसी रखने के लिए मैं हर चीज को डॉक्यूमेंट करती थी ऑन सोशल मीडिया। आई यूज्ड टू पोस्ट एवरी अपडेट अबाउट इट। तो जब मैं पोस्ट करती थी और कोई पोस्ट मेरी वायरल हो जाती थी, उस पर ट्रैक्शन आने लगता था ना, तो मुझे रेलिवेंट मिनिस्टर्स भी ट्विटर पे रीच आउट करते थे, कमेंट करते थे कि वी आर इंटरेस्टेड इन टेकिंग द बिल अप, एंड आप हमें इमीडिएटली डीएम करें। राइट अवे मैं उनको डीएम करती थी विदाउट वेस्टिंग अ सेकंड। मैं फौरन डीएम में घुस जाती थी, उनको भेजती थी, फॉलो अप करती थी। नथिंग, nothing would come out of it. They would ghost me like anything. They would vanish. मतलब वो एक रिप्लाई भी नहीं करते थे। मैं कहती थी यार आप बिल पढ़ तो ले, अगर आपको नहीं समझ में आएगा तो कोई जबरदस्ती तो नहीं है, आप टेकअप ना करें उसको। बट आई मीन वेरी, उनका रिस्पॉन्स लेवल जनरली बहुत कम पाकिस्तान में नहीं। Okay. So, all right, the driving cause for your involvement in politics is what happened to Sabika, right? Because her name comes up whenever your reform efforts are being discussed. My question is, do we always need someone, you know, to die to trigger our determination to make a change in the society? Because आपने अपने एक इंटरव्यू में भी कहा था कि the drama Razia was meant to make Sabika's memory alive. What if she was still alive? Would you still have advocated for the amendments in the US gun laws and the Elections Act 2017? I mean, of course not. I mean, यूएस में गन वायलेंस से तो मेरा दूर दूर तक ताल्लुक नहीं था। एंड वेरी अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट मैं आपको बताती हूँ कि ऐसा था कि सबीका की जो शूटिंग इंसिडेंट था वो मई 2018 में हुआ था। उससे कुछ महीने पहले फरवरी में पार्कलैंड फ्लोरिडा में एक और शूटिंग हुई थी अमेरिका में, और उसके नतीजे में वन ऑफ द लार्जेस्ट यूथ लेड मार्चेस called March for Our Lives. It happened in Washington DC in the month of March 2018. और उस वक्त मेरे घर के वो चंद ब्लॉक्स दूर थे, यानी बस थोड़े से ही फासले पे थी। और बाकायदा मैं घर के अंदर बैठी थी, मुझे पूरे दिन आवाजें आ रही थी, लाखों लोग जमा थे वॉशिंगटन डीसी में। एंड आई डिड नॉट स्टेप आउट। आई रिग्रेट इट। आई रिग्रेट इट, क्योंकि आप इमेजिन करें कुछ महीने पहले तक गन वायलेंस से मेरा कोई लेना देना नहीं था। मैं Yeah. अपनी ही दुनिया में थी। आई वाज डूइंग माय ओन थिंग, आई वाज स्टडीइंग फॉर माय ग्रेजुएट, एंड आई वाज uninterested really. Now I look back and I think यार उस वक्त मुझे ये नहीं पता था कि कुछ महीने बाद this issue will become central to my existence in this country. तो I think अब जो हमारी आपका सवाल जो था ना, उसका जवाब कुछ इस तरह से प्रॉब्लम बनता है कि अब हम जिस माशरे में रह रहे हैं, और सिर्फ पाकिस्तान की बात नहीं, ग्लोबली ऐसा हो नहीं सकता कि आप इम्पैक्ट ना हो। आई मीन ऐसा जरूरी नहीं है कि आपको कोई पर्सनल लॉस ही हो आपकी फैमिली के अंदर या आपकी जिंदगी के अंदर बजाते खुद पर्सनली, फॉर यू टू डेवलप दैट सेंस ऑफ अर्जेंसी। क्योंकि लेट्स टॉक अबाउट क्लाइमेट इमरजेंसी, इट इज इम्पैक्टिंग एवरीवन, इट इज इम्पैक्टिंग एवरीवन, राइट। ऑफ कोर्स उसकी उसकी डिस्टिंक्शन ये है कि उसमें क्लास डायनामिक्स है, कि जो जितना गरीब है फिर वो उसके ऊपर उतना ही ज्यादा इम्पैक्ट पड़ता है चीजों का। लेकिन एज अ मैटर ऑफ फैक्ट climate is changing for all of us. As a matter of fact, economy is bad for all of us. As a matter of fact, young people are struggling to identify the right careers for themselves. As a matter of fact, young लोगों की आजकल savings ही नहीं हो रही है, जी जी। क्योंकि हमारी जो पिछली जनरेशन जो गुजरी है, जो बूमर्स की है, हमारे पेरेंट्स की जनरेशन गुजरी है, वो वाली इकोनॉमी हम अफोर्ड नहीं कर सकते आज। तो हमारी जाती जिंदगी में तो वैसे ही इतने सारे मसले हो रहे हैं कि वी कैन नॉट रिमेन ए पॉलिटिकल, we cannot afford to distance ourselves from what is happening around us. Exactly. So I think especially today young people, I think उनके अंदर वो inherently है कि they are just so deeply impacted, they feel very deeply about everything around themselves, which I think उसका फिर ये जवाब बनता है कि हाँ, I mean, the good thing is क्योंकि personal losses ना भी हो, तो they feel everything very personally, and they do have that sense of urgency there. तो शहीरा, जिस तरह आपने कहा कि
बिकॉज जो कुछ है उसमें गवर्नमेंट भी सपोर्ट नहीं करेगी और रिफॉर्म अपनाना चाहते हैं, यू आर डिटर्मिन्ड अबाउट इट, यू आर सो इंथुजियास्टिक अबाउट इट, मगर फिर भी हमारा माशरा इस तरह का है कि आपको जो मदद चाहिए, आपको फाइनेंशियली अगर मदद चाहिए और वैसे इमोशनली आपको सपोर्ट चाहिए तो वो उतनी नहीं मिलती। तो आपका कोई इरादा है कि आप दोबारा यूएस जाएँ या किसी और मुल्क, वहाँ से आप आप अपने एक्टिविज़्म दोबारा शुरू करें या अपने पर्पस के लिए आप आवाज़ उठाएँ वहाँ से? यार मेरा बिल्कुल भी इरादा नहीं है एटलीस्ट यूएस वापस जाने का इरादा नहीं है। आई मीन आई विल ऑफ कोर्स गो टू द यूएस अगर सभी का जो क्रिमिनल केस चल रहा है उसके शूटर के अगेंस्ट उसका कोई ट्रायल होता है आगे जाके, दैट इज माय पर्सनल इंटरेस्ट for the trial, but beyond that, no. There's so much which needs to be done. So much which needs to be done. कहते हैं हम पूरी जिंदगी अपनी पाकिस्तान में ही गुजार के पाकिस्तान को ही इफ यू ट्राई फिक्सिंग मसले आहिस्ता आहिस्ता खत्म होंगे जनरेशन आफ्टर जनरेशन. So it will take a lot of generations and it will take a lot of faith in this country from young people to fix a lot of issues here. So I think, for example, Pakistan ka currently one of the largest challenges our economy faces is brain drain, because a lot of young people are, they're deeply passionate about leaving the country for a good future, and I do not blame them. As a matter of fact, अगर हम बिल्कुल practically बात करें तो why should I blame a young person जिसको, because see, seeing is believing. I deeply believe in the fact कि seeing is believing. जब तक आप देखते नहीं हैं कोई रियलिटी तो आप विजुअलाइज नहीं कर सकते उसको. तो हमारे मुल्क में फॉर एग्जांपल जो यंग लोग हैं वो अपनी रिप्रेजेंटेशन क्या उनको नजर आ रही है अपनी आंखों से. अब जो पॉलिटिक्स है इन द कॉरिडोर्स ऑफ पावर, in people who represent them, in people who are elected by them, are young people seeing somebody who looks like them, who is a young person? No, I don't think so. Are young people seeing a blossoming, substantial, and sustainable future in this country? No, I don't think so. What फिर उनको दिख क्या रहा है? अगर ये नहीं दिख रहा है तो क्या दिख रहा है? उनको दिख रहा है कि a lot of other young people are stepping out of the country. तो उनको उसी चीज की अट्रैक्शन होगी ना. तो आई थिंक हमें अगर डिस्कोर्स को चेंज करना है और अगर हमें यंग लोगों को यहाँ रोकना है, उनको उनके अंदर पाकिस्तान के लिए फेथ डेवलप करना है, उनके लिए पॉजिटिविटी के लिए फेथ डेवलप करना है, तो इट विल टेक अ लॉट ऑफ एफर्ट फ्रॉम फ्रॉम द गवर्नमेंट. इट विल टेक अ लॉट ऑफ एफर्ट फ्रॉम द इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स कि वो यूथ को ये बताएं कि यार इस मुल्क की सियासत इज रेलिवेंट जी, जी। for you and then you are relevant for it, right? And I'm not talking about occasionally कि जी कोई एक आध प्रोटेस्ट हो गई तो आप जाके बैठ गए, कोई धरना हो गया तो आप जाके बैठ गए, nothing like that. I'm talking about really deep rooted structural reforms जो उन इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स को करने होंगे ताकि फिर वो नेशनल असेंबली के अंदर खड़े होकर ये कंप्लेन ना करें कि जी आज के यंग लोग तो वोट नहीं करते, आज के यंग लोग तो मुल्क छोड़ के जा रहे हैं. तो आपने इस मुल्क को के लिए इतना अट्रैक्टिव नहीं बनाया है ना, इस मुल्क के डिस्कोर्स के अंदर आपने उनको शामिल ही नहीं किया यंग लोगों को, आपने खुद ही उनको डिसएनफ्रेंचाइज किया है तो वो फिर इसलिए छोड़ के जा रहे हैं. तो आई थिंक पाकिस्तान, टू आंसर योर क्वेश्चन, आई थिंक just about so much needs to be done in Pakistan कि हमारी पूरी जिंदगियां खत्म हो जाएंगी, वो चीजें आहिस्ता आहिस्ता ही फिक्स होंगी. तो my own personal interest really is to stay back. I've decided to stay back in Pakistan and yeah, create a path here and do things here. तो अगले 10 साल में आपको पाकिस्तानी यूथ का क्या फ्यूचर नज़र आ रहा है? यार अगले 10 साल में ना, अभी 2024 स्टार्ट हो रहा है, अगले 10 साल में हो जाएगा 2034, 2034. मैंने जैसे जिक्र किया था शुरू में कि 2040 में पॉपुलेशन यूथ की है वो 150 मिलियन हो जाएगी, और उसके बाद यूथ का जो प्रोपोर्शन है ना वो आहिस्ता आहिस्ता कम होना शुरू हो जाएगा पॉपुलेशन. इंटरेस्टिंगली जहां हम हैं आज और अगले 10 से लेके 15 साल तक, this is the largest youth population Pakistan has ever had. Yani, to put it in a different perspective, Pakistan has never been this young as it is right now. We are the youngest
इन आवर ओन हिस्ट्री। पाकिस्तान की हिस्ट्री में इससे ज़्यादा यंग हम कभी भी नहीं हुए। लेकिन इसके कंपैरिजन में अगर आप देखें, तो मैं स्टार्ट्स फॉर एग्जांपल आपकी ऑडियंसेस के लिए अगर कुछ बताऊं, तो मैं जो पिछली हमारी कैबिनेट गुजरी है, जो पिछली गवर्नमेंट गुजरी है हमारी, उसमें फेडरल कैबिनेट में 26 में से 26 में से सिर्फ दो बंदे थे वो अंडर द एज ऑफ 35। सिंध की जो कैबिनेट थी उसमें 18 में से सिर्फ एक बंदा यंग था। खैबर पख्तूनख्वा में 12 में से सिर्फ एक बंदा यंग था। पंजाब में 36 में सिर्फ दो बंदे यंग थे, और बलूचिस्तान की कैबिनेट में कोई बंदा यंग था ही। जो पिछले स्पेशल असिस्टेंट टू द प्राइम मिनिस्टर ऑन यूथ अफेयर्स थे, ही वाज 47 years old। जो हम्म। इस वक्त स्पेशल असिस्टेंट टू द प्राइम मिनिस्टर ऑन यूथ अफेयर्स है, शी इज नियरली 35, बट दैट डज नॉट मैटर बिकॉज शी कम्स फ्रॉम अ पॉलिटिकल डायनेस्टिक फैमिली। या तो the representation margin in this country of young people, and even globally interestingly, इस वक्त जो यू अंडर 30 पॉपुलेशन है पूरी दुनिया में, दैट मेक्स अप मोर देन 50% ऑफ द ग्लोबल पॉपुलेशन। बट पूरी दुनिया में जो 45,000 नेशनल लेवल के पार्लियामेंटेरियंस है ना सारे मुल्कों के अंदर, 45,000, उनमें से सिर्फ 2.6%, नॉट इवन 3%, only 2.6% are under the age of 35, या राइट? इतना बड़ा हम गैप हमने रिप्रेजेंटेशन का रखा हुआ है, और पाकिस्तान में तो इट्स इवन वर्स। या इट्स इवन वर्स। या तो जो फ्यूचर है यूथ का इन नेक्स्ट 10 years, आई थिंक probably the only optimism I'm driving now is because a lot of focus has developed on digital economy, on हम्म। digitization of everything, on earning money by being online, right? From content creation, from freelancing, from skill development. A lot of interest in young people is developing for AI, for that sort of stuff, for robotics and for digitization of a lot of things, right? तो टेक्नोलॉजिकली मुझे लगता है कि पाकिस्तान की आप रूरल यूथ की भी अगर बात करें, बिकॉज अ लॉट ऑफ टाइम्स वी जस्ट फोकस द कॉन्वर्जेशन ऑन अर्बन यूथ, एग्जैक्टली, राइट? बिल्कुल। अगर हम रूरल यूथ की भी बात करें तो वहां पे एटलीस्ट एक बहुत पर्टिकुलर एवोल्यूशन मैंने देखी है यंग लोगों के अवेयरनेस लेवल में इस चीज को लेके कि हमें टेक्नोलॉजिकली अपनी स्किल्स को डेवलप करने की जरूरत है। ये अवेयरनेस आज से 10 साल पहले प्रॉब्लम इतनी नहीं थी। इवन बैक देन जब अर्ली 2000s में बूम आया था ना इंटरनेट का, वर्ल्ड वाइड वेब का, उस वक्त भी प्रॉब्लम मुझे इस स्केल के ऊपर यंग लोगों के अंदर वो हंगर नहीं पढ़ने को मिलता जितना अब देखने को मिलता है कि यंग पीपल आर वेरी रेस्टलेस कि यार हमें जो है ना मेन स्ट्रीम इकोनॉमी का हिस्सा बनना है, हमें डिजिटल इकोनॉमी का हिस्सा बनना है। तो आई थिंक अगर अगर गवर्नमेंट्स, अगर रेलिवेंट प्राइवेट सेक्टर के लोग, पब्लिक सेक्टर की जो एंटिटीज हैं, वो इस चीज पे अपने रिसोर्सेस को लगाएं कि यंग लोगों को हमने डिजिटल इकोनॉमी की तरफ लेकर आना है, टेक्नोलॉजिकल स्किल डेवलपमेंट करनी है यंग लोगों की, देयर इज अ लॉट ऑफ होप इन द नेक्स्ट 10 years for not just young people's skill levels, but also for Pakistan's economy as a whole. ठीक है। तो शहीरा, आप योरसेल्फ, आप एक you're a young person, और आप you're such a big inspiration for me, and not for me, a lot of people in Pakistan, a lot of girls, a lot of youth. तो आई मीन आप इतनी ज़हीन भी हैं। यू वेंट टू यूएस एज अ फुल ब्राइट स्कॉलर, और फिर आप वापस आई और आपने कैंपेन की, वहां भी आपने कैंपेन की और आपको थ्रेट्स भी मिली। मैंने देखा था एक इंटरव्यू में, आपने बताया था कि यू गॉट थ्रेट्स इन द यूएस, और उसके बाद में पैलेस्टाइन के लिए भी आवाज उठाई, और बिकॉज एंड दैट वाजंट सेफ। ठीक है, पाकिस्तान में भी सेफ नहीं है, और आपने यूएस में ये किया। तो आपके पास इतना डिटर्मिनेशन, इतना ऑप्टिमिज्म, ये होप कहाँ से आती है? आई मीन क्यों आप अभी तक स्ट्रगल कर रही हैं और रुक नहीं रही, डिस्पाइट द फैक्ट कि आपको थ्रेट्स मिल रहे हैं और आपको पता है कि जिस मुल्क में आप कर रही हैं, इट्स देयर आर लॉट ऑफ ऑब्स्टिकल्स इन योर वे, और यहाँ द ब्यूरोक्रेटिक रेड टेप इज एंडलेस। आप कोई काम करवाने गए हैं तो इट टेक्स एजेस फॉर इट टू बी डन, और आपने जो अगर कोई बिल पास कराना है तो उसके लिए भी काफी टाइम लगता है, एफर्ट लगती है, एंड इट्स लाइक ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल कि वो आपका काम हो जाए। तो हाउ आर यू स्टिल एज डिटरमिन्ड एज यू वर एट द बिगिनिंग ऑफ योर जर्नी? सबसे पहले तो एक चीज हमें क्लैरिफाई करने की जरूरत है, मैं बिल्कुल सही नहीं हूँ, सो लेट्स गेट दैट आउट ऑफ द वे।
दूसरी बात ये है कि सी over the years I've learned one thing. आज से let's say 5 साल पहले when I was in the US, और जब मैं पैलेस्टीनियन कॉज के लिए काम कर रही थी, उससे मुझे बहुत सारे लोगों ने मना किया था कि यू आर फुल ब्राइट स्कॉलर, आप एक एक्सचेंज स्टूडेंट हैं, आप इन चक्रों में ना पड़े। और स्पेशली आप जो भी पाकिस्तानी हैं, मुस्लिम हैं, तो बड़ी पॉलिटिकल कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं, और वो हुई भी, यानी बाकायदा थ्रेट्स हमें मिले, और मैं डर भी गई थी एक्चुअली। ऐसा नहीं है कि डर नहीं लगता, डर भी बहुत लगता है। और उसके फौरन ही बाद गन वायलेंस, पूरी हम्म। गन लॉबी, आप उनके टारगेटेड वो कैंपेन्स आपके अगेंस्ट रन कर रहे होते हैं। ऑफ कोर्स ये सब चीज़ें बहुत मुश्किल होती हैं। फिर पाकिस्तान आए, फिर आप यूथ कोटा पे आपने काम किया, उसमें लाइक यू मेंशन द bureaucratic red tapes and whatnot. I've learned one thing over these three particular campaigns, फलस्तीन वाली, गन वायलेंस वाली और यूथ कोटा वाली, कि 5 साल पहले I would have just dived into it, right? But now I advise a lot of young people that you need to conserve your energies. If I'm able to do it, Abibi, if I'm able to continue it, that is because you need to at some point take a step back and prioritize your mental well-being. Sometimes you have to do things which you like. For example, I stepped into acting so that I could conserve energy, and so that I could still a lot of people, because I get a lot of comments कि जी आपने यूथ कोटा पे क्या काम करना छोड़ दिया है now that you started acting. The answer is no, of course not. I will continue working on it for as long as I can, and especially for as long कि वो बिल पास नहीं हो जाता, जब तक तो वो मैं करूंगी उस पे काम। लेकिन I realized कि things take a lot of time, हम्म। uh, and I have to strategize my energy accordingly. क्योंकि you know, Pakistan में, if you're doing a political campaign alone, yeah, even if you have a team, you have limited resources, and I'm not just talking about financial resources. I'm talking about emotional resources, your physical capacity as well. So you have to be very smart about whatever causes you pick up. If you pick up, because I see a lot of young people doing this now, you can, I mean, just for the sake of it, they would pick up 7 to 8 causes just to fill in the blanks and to put it on their CVs and probably that, and Yes. they would just advocate for whatever is trending and whatever is cool and whatever is hip. Mhm. Don't do that. If you're really committed to something, pick 2 to 3 causes, or pick a singular cause, conserve your energies, be strategic about it, and only then can you sustainably continue campaigning for something for a long time. और वो long time आपको लगेगा, वो लॉन्ग टाइम लगेगा। ये नहीं कर रहे ना आप, क्या आप एक प्रोटेस्ट में बैठ गए और आपको अपनी 5 डिमांड्स आपने मनवा ली हैं, और वो मिनिस्टर आए और आपने दे दिया है। और हाँ, पाकिस्तान में यही होता है, जितनी प्रोटेस्ट होती है यही होता है कि वो प्रोटेस्ट को खत्म करवाने के लिए द रेलेवेंट, अगर आपने इतना प्रेशर बिल्डअप कर लिया है, वो आएंगे आपके पास बैठेंगे, और वो कैमरा की आई बॉल्स मिलेंगी, वो आपकी डिमांड्स को जी। ऑन द सर्फेस वो एक्सेप्ट कर लेंगे, सब घर चले जाएंगे, खत्म हो गया मामला, कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा। द डिमांड्स वुड नॉट बी एक्सेप्टेड। जब वो एक्चुअली उस ब्यूरोक्रेटिक रेड टेप में आके फंसेंगी, तो उन्हीं 3 डिमांड्स को, 5 डिमांड्स को एक्सेप्ट करने के लिए कई साल लग जाएंगे। और वो जो कई साल वाली स्ट्रगल है ना, वो आपको अगर करनी है, इफ यू आर रियली कमिटेड टू अ कॉज, तो आपको फिर अपने आप को, यू हैव टू प्रिपेयर योरसेल्फ फॉर द कई साल वाली स्ट्रगल। एंड फॉर द कई साल वाली स्ट्रगल यू विल हैव टू कंजर्व योर एनर्जी, यू विल हैव टू समटाइम्स स्टेप बैक एज वेल। तो मैंने फिलहाल वही किया। ऐसा नहीं है कि डर नहीं लगता था खतीजा, डर लगता था। तो इट्स रियली ऑल्सो इम्पोर्टेंट फॉर यंग पीपल टू create their tribe, create their safe spaces, हम्म। you know. जी। And it's probably a good idea, because I've done completely opposite to it. मैं हमेशा अकेले ही काम किए हैं सारे। तो इट्स ऑलवेज अ गुड आइडिया कि आप एक ग्रुप की सूरत में काम करें, ताकि लॉट ऑफ पीपल जो उसमें बैगेज फिर डिवाइड हो जाएगा उनके अंदर, लॉट ऑफ माइंड्स कमिंग टुगेदर। तो मे बी डू दैट। ओके, तो आपकी फ्यूचर के क्या एम्स हैं, क्या प्लान्स हैं फॉर क्रिएटिंग अ बेटर टुमारो?
I think maybe I just continue acting because I've realized कि मैं स्ट्रैटेजी की बात कर रही थी, तो स्ट्रैटेजी के हवाले से मैंने पिछले 4 साल में रियलाइज किया कि यूथ कोटा बिल का कुछ हो ही नहीं रहा, एक डेडलॉक में आके वो फंस गया है। हाँ ठीक है, वो पार्लियामेंट में इंट्रोड्यूस हो गया था, हाँ ठीक है, वो स्टैंडिंग कमेटी में चला गया था, बट टू बी रियली ऑनेस्ट, व्हेन यू गो इनटू दोज मीटिंग्स, आपको अपना टाइम निकाल के पैसे खर्च करके, यू हैव टू, you're doing a job on the side, and you have to manage everything, and you have to travel across anywhere, absolutely anywhere. आप शाम में बैठे, you have to come to Karachi, you have to come to Pindi and do it on your own. तो फिर आपको रियलाइज होता है उन मीटिंग्स में जाके कि यार आपको एम्पलीफिकेशन नहीं मिल रही है, आप हम्म। बोल बोल के थक गए हैं, और ये लोग कन्विंस नहीं हो रहे हैं आपकी बात से। और इंटरेस्टिंग बात है कि मेरी बात नहीं थी, मेरी डिमांड नहीं थी, एक पूरी रिसर्च पे बेस्ड बिल था वो, पूरे 1 साल की रिसर्च थी ग्लोबल, उसमें पूरा लिटरेचर उसमें इन्वॉल्व था, पूरी रिसर्च इन्वॉल्व थी, और यंग लोगों की डिमांड भी थी। मेरी अकेले की तो डिमांड नहीं थी ना, मुझे तो एक टिकट मिल जाता है, एंड आई वाज नॉट इंटरेस्टेड इन कॉन्टेस्टिंग इलेक्शंस बाय द वे। तो वो तो यंग लोगों की डिमांड थी। तो आई रियलाइज कि मैं मीटिंग्स बैठी होती थी, कन्विंस नहीं हो पाता था। तो फिर आई रियलाइज कि यार, अ गुड way to go about things probably could be कि number one, I am also interested in acting. That's something which attracts me naturally. So why not step into this industry, ताकि आपको वो माइक मिल जाए आपके हाथ में, वो एम्पलीफिकेशन मिल जाए, कि वही चीज़ मैंने 4 साल लगाए और कहीं just went nowhere. तो my hope now is probably for things to expedite, शायद वो speed up हो जाए अब, maybe when the elections will come, and तो मुझे ऐसा लगता है कि that's my plan for the immediate next future, कि मैं एक्टिंग अपनी कंटिन्यू करूँगी प्रॉब्ली, एंड माय ऑफ कोर्स माय एफर्ट विल बी के कुछ इस तरह का काम करूँ एक्टिंग में भी कि सोशल मैसेजिंग भी हो, कोई अच्छा उसमें रिफॉर्म के हवाले से बात हो, माइंडसेट्स के हवाले से बात हो, और साथ ही साथ कंटिन्यू माय पॉलिटिकल कैंपेन फॉर यूथ इलेक्शन कोटा। फ्यूचर में अगर आपको शहीरा कोई ऑफर आती है किसी ड्रामे की, या इवन अगर आपको कोई ऑफर आए कि टू एक्ट इन अ मूवी और समथिंग, तो आप किसी भी ड्रामे को आप चूज कर लेंगी, या तैयार हो जाएंगी उसमें ऐड करने के लिए, या आप उसी को चुनेंगी जिस तरह रजिया था, दैट हैड अ पर्पस, जो सोसाइटी के एक सोशल प्रॉब्लम के साथ डील करता है? I mean, if I were lucky, I would be only getting projects like RAZIA, जिसमें बहुत सारी सोशल मैसेजिंग हो रही है, और इतना कॉम्पैक्ट तरीके से, इतने पावरफुल तरीके से हो रही है। But of course, that's not how things work in Pakistan's drama industry. हर तरह की स्क्रिप्ट्स होती हैं, हर तरह के कैरेक्टर्स होते हैं, a lot of stories I think need to be told. तो अभी तो मैं उस स्टेज पे हूँ where I'm just open to exploring things here. Let's see what comes my way and how can I lead interesting telling stories. Stories which challenge me as an actor, and stories which have some margin of social messaging. कुछ interesting margin निकल कर आए उसके अंदर से. So that's something I look out for whenever an offer comes my way. तो अच्छा, एक आखिरी सवाल है मेरा शहीरा, कि व्हाट डू यू डू इन योर लेजर टाइम, इफ यू गेट एनी, दैट इज? ये टाइम इस इंडस्ट्री में आने के बाद, good job. I like your sense of humor. या नहीं होता, मतलब वही शूट बहुत लंबी होती है, it starts like the call time could be anywhere from 5 in the morning, it could go on and on and on and on. तो leisure time नहीं है, but I think any time that I get for myself जी is जी। probably, it goes into two things actually. One is into studying the craft of acting, because I want to improve myself as an actor. हम्म। तो मैं बाकायदा पढ़ने की कोशिश करती हूँ, गुड फिल्म्स, गुड कंटेंट। और दूसरी चीज ये है कि मैं यूथ कोटा के बारे में, I'm still, and I will continue to be so passionate about it, that I always keep a watch out on कि यार क्या opportunity बन सकती है, can I get a meeting here, can I get a meeting there, can I push it here, can I push it there. तो फिलहाल वो चल रहा है यूथ कोटा पे इस वक्त, थोड़ा सा I'm stepping back because अभी सिर्फ इलेक्शन का इंतजार है, nothing much can be done right now,
लेकिन जैसे इलेक्शन होते हैं तो आई विल once again get on with it. Mhm. Okay. So now, Shahira, we're really grateful that you became a part of this conversation tonight. It really means a lot. जिस तरह रज़िया ने कहा था कि अपने हिस्से की रोशनी इंसान को खुद रोशन करनी होती है, तो you are an epitome of that, and you're a source of inspiration for many, including myself. And I really want you to be, I want myself to be like you when I grow up. And अच्छा, so last में, do you have any advice for me? Any advice for you? Mm, yeah, I think एक advice है. ये advice ना थोड़ी सी confusing हो सकती है, but I think at this point this is the only advice I can give is if you're truly committed to something, and if you are, you will not have to find it, it will find you. You will not have to seek it, it will seek you. So whatever that thing is, be crazy about it. Be absolutely crazy about it. Be restless about it. Be crazy about it. Unless you are crazy about it, I think you're not committed to it. You're not sincere to it. That said, simultaneously, you have to prioritize your mental well-being. You have to prioritize your physical safety. तो उस एक चीज के साथ साथ find a few other things which make you happy. It could be the company of good people. It could be any recreational activity. It could be a hobby. It could be absolutely anything. It could be good music, good movies. Just find those things which can take the stress away from this crazy, chaotic thing that has chosen you as its voice. Okay, Shahira, thank you so much. And once again, thanks a million for joining us tonight. और आपने वक्त निकाला इसके लिए, and I know कि आपकी तकरीबन every week आपको शूटिंग के लिए जाना होता है, आपकी youth activities भी साथ चल रही हैं, और acting career and everything, and you're extremely busy. तो उसमें से भी आपने वक्त निकाला हमारे लिए. It means that you do, kind of consider whatever we're doing. तो उसके लिए आपका बहुत शुक्रिया. And all I can say is that do stay in touch, and आप जो कर रही हैं अल्लाह आपकी उसमें मदद करें और आपको आपकी हिफाजत करें, because it's not an easy task. उसमें आपको थ्रेट्स मिलेंगी. आपको अगर जितना ज़्यादा डिटरमिन्ड होते जाएंगे, जितना ज़्यादा आप रेडिकल होंगे, उतना ही आपको आपकी जान को भी खतरा हो सकता है. बट अल्लाह उसमें आपकी मदद करे, और इंशाल्लाह आपके लिए आपकी जो जर्नी है इजी हो जाएगी. तो have a good night, and yeah, stay in touch. Thank you for having me, Peter. It's an honor for me. It's an honor for me that I got a chance to speak to you. Best wishes with absolutely everything to you. Yes. Thank you so much, Shaheera, and Khuda Hafiz.